Ladies and gentlemen, as we speak, the government of India is making a last-ditch attempt to convince protesting farmers to go back home. A meeting between protesting farmers and 3 union ministers has now been scheduled for tomorrow. Question is, can there be a breakthrough? It looks tough given what has happened today, given the fact that farmers were tear-gassed today as well. They are alleging that rubber bullets have been used against them. And why talks are looking tough is because of the fact that the government is certain that a MSP law is simply not fiscally feasible. So essentially, we are staring at a situation that is not likely to go away anytime soon. It was day 2 of the farmers' Delhi Chalo protest after a mega showdown between the cops and 200 kilometers away from Delhi. This is where once again today clashes were reported between cops and protesters. Once again, farmers tried to break barricades, and once again, they were met with tear gas shells. Now, most of these tear gas shells were fired from drones. Farmers had come prepared. They put up a desi defense, flying kites to counter drones. In fact, they managed to bring some drones down as well. The protests and the protesters, which are still some 200 kilometers away from Delhi, are now set to intensify. Farmers say they will storm Delhi tomorrow. One faction of the farmers has also announced a rail roko in Punjab to show solidarity with the farmers who are marching towards Delhi. Let me try and see if I can go across to Gurpreet, who is joining us from the Shambhu border, which essentially for the last 2 days has emerged as the epicenter of the farmers' protests as the farmers try and march towards Delhi. Gurpreet, good evening to you. You're joining us from Shambhu border that once again saw high drama today. The centre and the farmers are meeting once again tomorrow. Does that mean that till the meeting is over, the farmers will stay put at Shambhu border and not try and march towards Delhi? Government has called you for another meeting. So what do you expect? क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है? देखिए, यही तो एक्सपेक्ट रखनी चाहिए भी सरकार को आने वाले समय में ये जो हमारी मांगे उसके लिए कोई ठोस हल करेगी। क्योंकि 2 मीटिंग्स पहले भी पंदेर साहब हो चुकी है, उसमें कोई सिट्टा नहीं निकला, पहले भी काफी लंबी मीटिंग्स की है, तो अभी क्या लगता है कि अब वाली मीटिंग में क्या निकला, क्योंकि एमएसपी पे फिर पेच फंस सकता है? हाँ, देखिए, अभी मीटिंग से पहले इस तरह की बात सोचेंगे तो शायद उचित नहीं होगा। मीटिंग के बाद में करेंगे। हम अपनी ओर से केंद्र से जब वार्ता करने जा रहे हैं तो हम आशा रख के जा रहे हैं भी केंद्र इन मसलों का ठोस हल निकाले। अब कल की मीटिंग के बाद में देखेंगे क्या होता है। तो क्या दिल्ली चलो आंदोलन, क्योंकि लगातार दो दिन से चल रहा है और लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार गोलाबारी हो रही है, रोका जा रहा है, कई कुछ हुआ, आज आपने ड्रोन भी फेंका, उसके बाद लगातार ये स्ट्रगल चल रही है, तो ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जहाँ इसको रोका जाएगा, क्या उसकी रणनीति बना? देखिए, आज भी हमने आगे बढ़ने का निर्णय पर रोक लगाई थी। हमारे आदमी पीसफुली खड़े थे। 2.5 घंटे केंद्र के अर्धसैनिक फोर्सों के ऊपर से हमारे ऊपर शेलिंग की गई, तो कुछ इधर से भी बड़खाट हुई। तो आप देखिए, अगर केंद्र हमारा रास्ता ना रोकता, हमें दिल्ली जाने देता, पीसफुल प्रोटेस्ट करने देता, कोई भी घटना इस तरह की नहीं होनी थी। इससे पहले 2 साल पहले की कमिटमेंट है, 1.5 महीने से पहले आंदोलन का ऐलान किया है। हर एक देश के किसान मजदूर से थोड़े ना खतरा, आपके पास पुलिस है। तो केंद्र की नीयत ठीक नहीं है, हमारे ऊपर अधिक से अधिक बल प्रयोग किया जा रहा है, जिससे केंद्र को बचना चाहिए। तो लगता है कि कल की मीटिंग के बाद अगली स्ट्रेटजी बनाएगी, उस टाइम तक यहाँ प्रोटेस्ट चलेगा, लोग बैठेंगे, क्या करेंगे, क्या ये भी एक बार रणनीति बताइए, कल तक क्या रणनीति है 5 बजे की मीटिंग से पहले? देखिए, हम कल आगे नहीं बढ़ेंगे, पर उनकी तरफ से अगर शेलिंग इस तरह से हुई तो इधर से भी शायद हमें रोकने में मुश्किल हो। हम तो आशा करेंगे भी केंद्र उधर से अर्धसैनिक फोर्स व्हाइट फ्लैग लहराएं, वो चुप करके रहें, इधर से भी शांति रहेगी। So, well, this is the strategy of the farmer. They say the meeting, they are very hopeful that there will be some results of the meeting, because already 2 meetings had happened, and 3rd meeting, they say it seems that the union minister, they are aware of their problems and they are trying to find out solutions. So let's wait what will come out of this meeting, which is going to be held in Chandigarh tomorrow. As of now, we have seen the farmers, they are hopeful that there will be positive result tomorrow.
Okay, so Gurpreet, thank you very much for getting us that voice from Patiala. The leaders of the farmers' protest are saying two things very clearly. A, they are saying, let's wait and see what the outcome of the talks tomorrow is. As you know, 3 cabinet ministers will be meeting with farmer leaders in Chandigarh/Patiala to try and see if there can be some degree of compromise. So A, that is what the farmers are saying. They are saying that we will be attending that meeting. The centre has called for that meeting. We will be attending that meeting. Secondly, the farmers are saying उन्हें किसी ने मना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उनकी आदत है झूठे वादे की। Now, in Haryana, the epicenter of the protests right now, Section 144 is in place in 15 districts. The Home Minister of the state, Anil Vij, is blaming Punjab, ruled by the Aam Aadmi Party, for giving farmers a free pass. He's also saying the protests are political and have nothing to do with real issues of farmers. Listen in to Anil Vij. ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है, वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। और मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी करा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? Now, yesterday, in clashes between cops and farmers, there were injuries on both sides. 24 policemen and 60 farmers were injured with rubber bullets. Farmers say this is perhaps the first time that the paramilitary is being used against them. ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੈਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਨੇ, BSF ਤੇ RPF ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਆਹ ਰਬੜ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਆਹ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। So tear gas and rubber bullets for farmers in Haryana and tears for citizens in Delhi, which is 200 kilometers away. The barricading of 5 borders in Delhi has led to massive traffic jams in the city. Traffic is completely paralyzed. Expressways have turned into crawlways. And as Delhi chokes, 2 heart-wrenching cases have surfaced from the Singhu border. Let me start by talking about a pregnant woman who was in pain and was bleeding. She had a terrible experience on Delhi's roads today. She was struggling to commute because the Delhi police has blocked most roads. She eventually was helped by the police. Take a look. जहाँ किराया 20 रुपया था तो 100 रुपया हो रहा है। वह मजबूरी में तो जाना पड़ता है सबको। पर गारंटी लाए थे, रिपोर्ट देखा, बोला बच्चा सही है। यहाँ से थोड़े दूर से चल के यहाँ पे आए हैं, स्टैंड से यहाँ आए हैं न। चलते हैं तो दर्द उठ जाता है यहाँ पे पैरों पे। अच्छा, तो अभी आपको कोई ऑटो कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कैसे जाएंगे? Okay, let me go straight across to Ela, who is joining us on the broadcast as well. It is about 8:13 p.m., which means this is time when you'll usually find traffic on Delhi's roads. But right now, as we speak, this is not normal traffic that we are talking about. Ela, you're at the DND flyover. Tell us what's been happening. What are things looking like where you are? Well,
absolutely, Shreya. As we know that Farmer 2.0 protest is going on. Farmers have called that they are going to march towards national capital Delhi, and talks are going between the ministry as well as farmers. They are saying that they are going to sit at Shambhu border till evening tomorrow peacefully as the negotiations are underway. But let me show you that what is the condition of the borders which are adjacent Delhi and Noida, and other borders like Ghazipur, Tikri and the Sindhu borders are also facing massive traffic jams, and people are getting stuck for hours in traffic jams. And if I talk about the major traffic we are seeing is at DND right now. It is the evening time. We usually see traffic at DND, but these days traffic seems massive as the police has deployed barricades, and the deployment of police is also increased at the borders. So we are seeing that due to the checking, due to the barricades, the traffic has increased in Delhi, Noida, Delhi borders, as well as Ghazipur border, Tikri border and Sindhu border. At Sindhu border, we were seeing that people have to walk for miles to catch a auto, to catch a bus, or to get any kind of public transport, because the borders are sealed right now due to the farmers' agitation. The farmers are saying that the talks are underway and they are going to march if there is no resolution. Farmers are saying that their basic demand is that MSP should be fixed. So, but amidst all of that, it is the common people who are still suffering. Over to you. Absolutely. So, thank you very much, Ila there reporting from the DND flyover. Anyone who's had to make their way from Noida or Noida to Delhi or actually Delhi to Gurgaon, away from Delhi's border. So they've not reached Delhi. And yet citizens are already feeling the pain with massive traffic jams. And why are these massive traffic jams in the city, despite the fact that the farmers are nowhere close to them? Simply because the Delhi police has put in barricades at every border. So all arterial roads, they continue to be. It's not like traffic is not moving. Traffic is moving, but it has slowed down because there is barricading, there is police checking, which obviously these are processes that slow down traffic anywhere in the world, exactly what is happening in the national capital. Meanwhile, politics around farmers is speaking as well. Hours after announcing a law for MSP, Rahul Gandhi today spoke to an injured farmer. He assured farmers of his support and he condemned the police's action against them, calling it completely wrong. Listen in. सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा, और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज़्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ रेफर। हाँ चंडीगढ़ 30 के करीब। अच्छा। सर मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ। मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहाँ है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेररिज्म कोई मिलिटेंट नहीं है सर। I might add that the government should have learned a lesson from the previous farm agitation. I don't understand why the government doesn't learn from its own mistakes and deals with this problem in a more humane and more democratic manner. Now, while the Congress party continues to extend support to the agitating Annadatas, the BJP has called out the Congress's duplicity and U-turns. The BJP is saying that the same Congress that was leading the UPA back in 2007 had rejected the MSP formula by the Swaminathan panel, saying that it will distort the market and be counterproductive. Remember, the National Commission of Farmers, headed by MS Swaminathan, had recommended actually that the MSP should be at least 50% more than the weighted average cost of production. However, when the National Policy for Farmers 2007 was finalized, the UPA government did not include this recommendation. A 2010 note rejecting the Swaminathan Commission's report from the UPA regime has also surfaced and is now going viral.
देखिए, कांग्रेस के पास में कुछ जनाधार तो है नहीं, कुछ करने के लिए कुछ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस जब कहाँ गई थी? 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी और 2006 से 2014 तक इनका शासन रहा है, क्यों लागू नहीं की? खाली दूसरे को आदेश देने के लिए है। राज्यों में इनकी सरकार चल रही, क्यों नहीं की? मध्य प्रदेश में ये बोल कर आए थे कि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर हम अपने किसानों के कर्ज को माफ कर देंगे, क्यों नहीं करा? आज भी राज्य में सरकार है, करके दिखाए ना, कोई मॉडल तो पेश करे। I want to ask you, I do want to speak about the Swaminathan Commission recommendations, how the Congress didn't implement them, and now they are saying, you know, we are perfectly ready to do it when we come to power, as in when we come to power. We'll talk about that in just a bit. But Tushar Gupta, does anything justify rubber bullets being used against farmers? Well, does anything justify vandalizing of private property and public property? Does anything justify holding a national highway hostage, one that connects the national capital to Punjab, Haryana, Chandigarh, Ladakh, Jammu and Himachal? Does it? It does not. It's the people of Punjab who are suffering because the logistics are suffering. I have spent my life traveling on the GT Karnal Road, coming from the region. Nothing justifies the vandalism. Nothing justifies holding a city hostage because you want your demands to be agreed upon by the government. You're asking for a law to be brought in by the government when you know that the last Lok Sabha session has been done. It's been not going to happen until the next election. Yeah. But Shreya, since we're on the topic, we need to look at it dispassionately. I don't care if the average annual income of a farming household in Punjab is rupees 3,20,000. Tushar, can you give me a minute? Okay. Give me a minute. I'll come to it. I'll come to the details. That is going to be the crux of the debate this evening. But give me a minute. I'm not comfortable with the paramilitary firing rubber bullets at farmers. तुषार बोल रहे हैं, आप किसान नेता हैं मास्टर शिवराज सिंह, तुषार बोल रहे हैं कि जस्टिफिकेशन क्या इस बात का? एक मिनट तुषार, जस्टिफिकेशन क्या इस, तो फिर इस चीज का भी जस्टिफिकेशन है कि अगर किसान उपद्रव करेंगे तो पैरामिलिट्री उन पे गोली चलाएगी। देखो, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं किसानों से भी और हरियाणा के प्रशासन से भी हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि ऐसा प्रतीत ना हो हिंदुस्तान में रहते हुए कि जैसे मुगलों की सरकार या अंग्रेजों की सरकार जो बर्ताव करती थी वो बर्ताव किसी के साथ हो। आज ऐसे लग रहा है जय जवान जय किसान के बीच में जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे दोनों तरफ से युद्ध हो गया। और मैं एक चीज आपको और बताऊं कि सारे चैनल ये कह रहे हैं किसान ये कर रहा है, किसान वो कर रहा है। माननीय मोदी जी ने आकर के कुछ किसान नेताओं से सपने में कहा कि मेरी सरकार, मेरे मंत्री कुछ सरमाएदारों के दबाव में आ गए हैं। मैं 2011 से सिफारिश कर रहा हूं कि MSP को गारंटी कानून बनाया जाए, C2+50 लाया जाए। जो जंगली जानवर हैं, आवारा पशु हैं, वो खेतियों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए कृषि सुरक्षा दल का गठन किया जाए। देश में किसान आयोग का गठन किया जाए। शिक्षा स्वास्थ्य में जो गांव में सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य होता है, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनमें सुधार लाया जाए। एक मिनट सुन लो, किसान आयोग का गठन किया जाए। लेकिन मैं 2011 से माननीय स्वामीनाथन आयोग की C2+50 की और MSP गारंटी की सिफारिश करता रहा। ना तो कांग्रेस ने माना और 10 साल मेरी सरकार हो गई, उसने भी मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आप आंदोलन करो ताकि सरकार पर दबाव बने और MSP गारंटी कानून बने और C2+50 लगे। ये स्वप्न में आके माननीय मोदी जी ने कहा था। मैं अंतरात्मा से चाहता हूं, लेकिन मेरी सरकार के मंत्री सरमाएदारों के दबाव में आ गए और वो इस सिफारिश को मेरी को नहीं मान रहे। नहीं तो आपका पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट क्या है? आज मैं आपके सपनों में तो बहुत चीजें आ रही हैं, लेकिन आपका पॉइंट क्या है? मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक दिन मेरे परिवार में बात हो रही थी। मेरे बच्चे ही मुझसे कह रहे थे, पापा पूरा जीवन तुम्हारा खेती करते हुए निकल गया, ना आप हमको अच्छा पढ़ा पाए, ना आज हमको रहने के लिए मकान दे पाए, ना अच्छा खिला पाए। हम हमेशा गरीबी में जीते रहे। खेती इतना घाटे का सौदा हो गया, तुम महंगी लागत लगा के खेती करते रहे, तुम्हें फसलों का उचित मूल्य भी नहीं मिला। आज हमको नौकरी भी नहीं मिल रही है इस महंगाई के दौर में। बताओ कैसे अपना जीवन यापन करें? अगर आप किसान नहीं होते और आप कोई और धंधा किए हुए होते तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। अरे मेरे बच्चों ने मुझसे घर पे बैठ करके कहा, आज दिल रोता है कि किसान सौतेली माँ का बेटा हो गया है। कृषि प्रधान देश में आज का युवा खेती करना नहीं चाह रहा है, खेती से मोह हटता जा रहा है, खेती घाटे का सौदा हो गया है। क्या करे बेचारा किसान? मोदी जी तो सपने में आके कहते हैं। ठीक है, नहीं मोदी जी ने तो खैर आपको सपने में आके कुछ नहीं बोला होगा, बट तुषार गुप्ता, देयर वर सर्टेन प्रॉमिसेस मेड।
One was, of course, a rollback of the 3 farm laws. That has already happened. I'm not sure whether there was a promise for an MSP law. The farmers say there was a promise for an MSP law, but the government says, no, we never committed to it. Now, what is commit to an MSP law? Okay, Shreya, give me 2 uninterrupted minutes, please. Let me break down this whole matter. Let's explain the fiscal side of it first. India's budget expenditure for this fiscal is rupees 45 lakh crore. If I were to take the total value of the agricultural produce, that's 40 lakh crore. So if they're asking for a universal MSP, they're saying of the 45 lakh crore, the center spends in a year, spend rupees 40 lakh crore on us, and this is only the farmers of the total agricultural produce. Then you come to the MSP produce. That's rupees 10 lakh crore. Are we really going to spend 1/4 of our budget expenditure just on MSP crops? Can we afford to do that? No, we cannot. Number 2, they say if the government can't spend that kind of money, anyone who's buying from us, be it the private sector, be it you or me as entrepreneurs or individuals, we should pay over an MSP. Now imagine if that is the case, that will lead to double-digit food inflation in the long run. You're essentially going to have to pass on the cost to the consumers. So if the government doesn't buy the entire produce at MSP, private traders start picking it up. The biggest private traders will go for imports. The smaller private traders will pass on the cost to the consumer, and you have double-digit food inflation. Now let's come to the third point, Swaminathan Commission report. First, a very, 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 very important fact check. The Swaminathan Commission does not say anything about legalizing MSP. Very, very important. It doesn't say about guaranteeing MSP. It proposes a formula. Now, if you're going to go for the formula, which the farmers are demanding, you have to go with the input costs. Am I correct? But already the government is also spending a lot on the farmers. You have rupees 2.5 lakh crore as fertilizer subsidy last year. Center has a seed program with the 50% subsidies offered on seeds. Fasal Bima Yojana, for every 1 rupee taken as premium, 5 rupees is paid to the farmers as claims. You have other specific programs in terms of credit, in terms of organic farming, in terms of infrastructure, where the government is spending on the farmers in kind. So if you want the Swaminathan formula to be imposed, where it's cost plus 50%, let's factor all in these costs also. And my final point, again, it's one section of the farmers, not all India farmers, and there is a reason to it. Because more than 80% of the wheat and paddy that is grown in Punjab has always been procured on MSP. The Arthiyas have made a nice brokerage out of it because they are the ones who facilitate the trade. Now, the problem is, even the Congress government in 2019, in its economic survey in Punjab, under Captain Amrinder Singh said, your ecosystem cannot sustain these crops, diversify. We'll support you. This was the Congress government. The BJP is saying, grow millets, we have subsidies for you. But these farmers need to explore new annually, cultivating mushrooms. Now, if the farmers of Punjab are saying, we don't want to explore a new market, we don't want to access a new market, the government comes and buys everything and anything will go under the sun, that's just an unjustified demand. Okay, so here's the thing. Here's what I want to say. The farmers are not saying that the government procure everything. What they are saying is that we want an MSP bill that guarantees MSP, and we are not asking the government to buy everything. Whoever buys, whether it's the government or the private players, let there be a minimum support price under which no one can procure anything. So the farmers are making that clarification. So ये 10 lakh crore वाला जो figure है ना, that is also slightly misleading, because it's not 10 lakh crore that the government of India will have to spend. Because the farmers are not saying buy everything we produce. They're saying just fix an MSP. No, it's absolutely not. No, I'm Shreya, sorry. No, look at the first. No, look at the first. ये जो प्राइवेट व्यापारी हैं जो आड़ती हैं, वो एमएसपी से नीचे खरीदना करें. इसका मतलब ये सो होता है कि ये सरकार प्राइवेट व्यापारियों के लिए भी कानून बनाने को तैयार नहीं है. सारा गल्ला तो कभी भी गवर्नमेंट नहीं खरीदती है. हम तो प्राइवेट मार्केट के लिए कह रहे हैं. प्राइवेट मार्केट सबसे नीचे का मूल्य होता है. एक और बताऊं, पूरा देश मैक्सिमम पर चलता है उच्चतम प्राइस पर, और किसान एक मिनट जी, गुप्ता जी, एक मिनट. किसान को न्यूनतम मिलता है, किसान को न्यूनतम मिलता है, जिसको, अरे भाई, मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम प्राइस है, सब सपोर्ट प्राइस है. ये लाभकारी मूल्य नहीं है, सपोर्ट प्राइस है. जो भी व्यापारी है वो सपोर्ट प्राइस से नीचे, न्यूनतम मूल्य से नीचे ना खरीदे. हम मैक्सिमम नहीं मांग रहे, उच्चतम नहीं मांग रहे हम. ठीक है तुषार, you are saying this is factually incorrect. Quickly, if you want to do a fact check, do a fact check here, then I have to go to the other people on the show. Yes. आपको यूरिया का खर्चा सरकार दे.
या आपको यूरिया का खर्चा सरकार दे, आपको सीड का खर्चा सरकार दे, आपको बिजली का खर्चा सरकार दे, आपको पानी का खर्चा सरकार दे, आपको फसल बीमा का खर्चा सरकार दे, उसके ऊपर आपको एमएसपी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमें प्राइवेट प्लेयर के लिए भी लॉ बनाना चाहिए। सरकार ने तो कहा था 2020 में आप जाइए प्राइवेट प्लेयर को अपने दाम पर बेचिए, तब आपने कहा हम प्राइवेट प्लेयर को बेचेंगे नहीं। सरकार ने तो आपको 2020 में कहा था कि ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ, आपको जो दाम सही लगता है उस पे पेमेंट नहीं होगी तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। आपने तो कोर्ट जाने के लिए भी मना कर दिया प्राइवेट पार्ट के लिए भाई। ठीक है, अच्छा ओके, कि सिर्फ आप एसडीएम और डीएम कोर्ट में जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जाएंगे। आपकी पेमेंट हो या ना हो, कैसी बात करते हो आप? एक सेकंड, मैं जो 3 कानून वापस हो गए उस पर जाना नहीं चाहता, उसमें बहुत सारा वो था। नहीं अभी रुक जाइए, 3 कानून वापस हो गए हैं शिवराज जी, 3 कानून वापस हो गए हैं। वापस हो गए, उस पर मैं बहस भी क्या बची है जब वो वापस हो गए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, तुषार लेट मी, वी विल गिव एन एमएसपी लॉ to the country and to the country's farmers. My point is, you had an opportunity to give MSP law to the country's farmers when you were in power. You didn't do it because even you felt it wasn't fiscally feasible. Now why are you doing it? Are you fishing in troubled waters in an election year? जय हिंद। पावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। What these farmers are asking for today, and the question that you've asked me, Shreya, about the Swaminathan report, I think Mr. Pawan Khera ji has aptly answered that question today in his press conference, that out of the 175, out of the total recommendations, we had implemented 175 recommendations, 26 were remaining, and the 26th guarantee is what we are giving now, because we're talking about Panch Nyay today. You see, it seems as if the government is at a perpetual war with its own citizens. Is it only the farmers today? In Ladakh, there are the citizens of Ladakh out on streets. In Bihar, there are teachers out on streets. We just saw the truckers out on the streets all across the country just the last month. So this government is at war with anyone and everyone who will go out to question them. Mr. Tushar Gupta was just speaking and he was talking about replacing with innovative methods. This was going to use these drones for innovation in farming advancement. And these drones are being used for what? For shooting our own farmers, for shooting tear gas on them. So if the farmers are going to start growing innovative crops, is Mr. Tushar Gupta going to start growing the staples? So you see, this is all wishful thinking and wishful talking what Mr. Tushar Gupta along with the government is doing. And we'll just see the BJP spokesperson also talk about it. But when they come to your show, they should also talk about... Is Rahul Gandhi also doing wishful thinking? I've been, Mahima, is Rahul Gandhi also doing visual thinking? Because if you are serious about an MSP law, why wait for the elections? Chodo na election ko. There are states that are ruled by the Congress party. Bring in an MSP law. Guarantee MSP for every crop to farmers of the states that are ruled by the Congress. Allow me a fair chance, Shreya. I've been waiting for almost 35 minutes now. So I was saying that if they are coming to your show talking about, discussing about this issue today, they should have come also remarking about the Punjab and Haryana High Court's, issuance of the advisory yesterday in his order, in their stern order, where they've said that protest is an expression of detestation and that is well deserved by the farmers. Allow protests. They're just Mahima, you're not answering my question. Why stop them? In many states, because why don't you, right away implement an MSP law guaranteeing MSP for all crops for farmers in those particular states? Yeah, why are we not asking? You had a chance. You didn't do it. Now you have a chance again. Shreya, why? Please allow me to complete this one sentence. Why are we not questioning the central government? Where is the committee they promised the farmers to discuss and contemplate the MSP guarantee 2 years ago when the farm laws were apologetically repealed? Instead, they have turned the whole country into, the Article 370 that they abrogated in Kashmir so many years ago. The paramilitary forces are being used in the capital of the country against the farmers of our country. Should we not ask the central government? You've still not answered my question. They have the larger power. No, you asked the central government that. I think the farmer on this panel wants to say something, and then I'm getting Mr. Patania in to specifically answer the charges that you are making against the government. बोलिए. पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, अगर कांग्रेसी
किसान हितैषी सरकार होती तो आज देश से इस तरीका से ये हालत नहीं होते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में रह करके और कोर्ट में खड़ा होकर के और प्रशासन के सामने खड़ा होकर के जितनी झूठ बोली जाए उतनी बोल लो तो फायदा होगा। राजनीति में झूठ एला हुआ है, कोर्ट में जो वकील बहस करते हैं झूठ एला हुआ है, और प्रशासन में पुलिस के सामने जब चाकू वाकू मार के जाते हैं जेब काट के, वहां भी झूठ बोल लो। अगर वहां सच बोल गया सत्यानाश, राजनीति में सही बोला तो सत्यानाश, कोर्ट में सही बोला तो सत्यानाश। राजनीति में झूठ बढ़िया पड़ती है, वरना ये। और एक चीज और बता रहा हूं, चुनावी घोषणा पत्र में और चुनावी सभाओं में जितनी बड़ी बड़ी झूठ बोल लो, अभी चुनावी घोषणा पत्र आएंगे, हम MSP है नहीं, ठीक है क्योंकि इन्होंने भी 60 साल राज किया और आज भी इनकी कई स्टेटों में सरकार है। वो वहां करके दिखा दे, बिल्कुल हमें विश्वास हो जाएगा। हाँ, बोलिए महिमा जी। ये तो किसान बोल रहे हैं कांग्रेस इज एज बैड एज द बीजेपी। मैं एक ही बात बस अपने किसान नेता सिंह साहब से पूछना चाहती हूँ, ये बताएं कि लखीमपुर के अंदर किसानों को रौंदा किसने, और 175 जो रिकमेंडेशंस थी स्वामीनाथन की सिर्फ 26 रह गई, वो किसने लगाई? कांग्रेस से कहा जा रही हो मैडम? वो टैनी के लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि उसे फांसी हो। हम टैनी हमारा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस ने किया है अपने कार्यकाल में 60 साल में, वो सुनना कांग्रेस को भी पड़ेगा, अपनी गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। मेरी बात पूरी होने और दीजिए। मोदी जी को भी आकर के ऑन चैनल माफी मांगनी पड़ेगी कि भाई मैंने 2011 में MSP के लिए सिफारिश की थी, गारंटी कानून के लिए, अब मेरी सरकार नहीं कर रही, मैं भी देश से माफी। अच्छा ठीक है सिंह साहब, एक मिनट रुक जाइए। एंड महिमा, जस्ट अ मिनट, लेट द बीजेपी स्पोक्सपर्सन, 175 let the BJP spokesperson also come in. बता दीजिए, और किसानों को रौंदा किसने, ये भी बता दीजिए। 8:40 and he has been waiting very patiently. रुक जाए, ठीक है, वो रौंदने वाली बात अभी नहीं चल रही है। And as he said, Mr. Teni is not his रिश्तेदार, so there is no need for him to protect Mr. Teni or the BJP here. But RS पठानिया है, लेकिन नंबर 1 डिमांड तो MSP के। जो पार्टी सत्ता में रहती है किसान को भूल जाती है, और जो पार्टी विपक्ष में रहती है उसे किसान की याद आती है। आज ये हम जानते हैं, और जब से देश आजाद हुआ है आज तक जानते हैं इस बात को। अच्छा ठीक है भैया, अब आप 2 मिनट जरा और बीजेपी को भी बोलने दीजिए। बोले, रुक जाइए। किसान की आवाज को दबाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मैं देख रही हूँ। नॉट फॉर द गवर्नमेंट एंड सर्टेनली नॉट फॉर टीवी एंकर्स लाइक मी। आरएस पठानिया, देयर इज अ लिस्ट ऑफ चार्जेस दैट द कांग्रेस पार्टी हैज मेड अगेंस्ट you. They are saying, A, you promised, and then you've gone back on your promise. Now you're saying, ये तो कांग्रेस ने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भी promise किया था. They went back on their promise. So it's essentially you're just lobbing the ball in each other's court. तू मैं चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है. Shreya, one thing very clear and very crystal clear, rather. Bharatiya Janata Party and Narendra Modi ji, they have done more than the farmers across the country than any farmers union has done till now. If we go by the statistics, okay, you see how the agricultural budget, it has spread by 6 or 7 times. 80 crore people having free ration, Pradhan Mantri Kisan Samriddhi, strengthened Kisan credit cards, the welfare schemes. So the rural distress has almost ended. My respectful submission and very humble appeal to all the farmers unions. Mr. Arjun Munda ji has made a very clear, categorical and specifically denied that MSP law could not be done. We are saying that we are ready to discuss it. And my learned friend has brought it along with statistics. A blanket MSP law for the entire country, this will be as good as a Frankenstein monster. This will be a biggest, with due respect, biggest stumbling block in the country's journey for India Viksit at the date of 2047. The problem with the Congress is that it has failed to address the sentiment and the spirit of the country. It has failed to decode the moral, ethical and political impulse of the country. They are just trying to provoke. But nation first, we need to impress upon, we need to understand that choking the arteries of the nation, choking highways, holding everything to hostage. We are ready to discuss. If we say that we will not discuss, if we say that we reject, they have every right to do whatever they want to do. But that even within the limits of the law of the constitution. So the farmers should understand. ठीक है. The timing of the farm agitation. ठीक है, पठानिया साहब कह रहे हैं. एक मिनट. That looked upon with suspicion. The way. Okay, Mr. Pठानिया, एक मिनट. This is again looked upon with suspicion. No, what is the suspicion? Yes. No, you are saying it's being looked upon with suspicion
Because you think it's coming in an election year, right? मैं जरा समझा दूं सिंह साहब को क्या बोला जा रहा है। वो कह रहा है एक तो शक की निगाह से आपके एजिटेशन को देखा जा रहा है, ऑलमोस्ट 2 or 3 weeks शक की नजर से आपके एजिटेशन को दिया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन का समय सुन लीजिए और हाउ डज इट जस्टिफाई, नहीं पूरा कैसे समझे, अभी आपने मुझे बोला बताओ क्या बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि आपका क्या हक है। एक मिनट पठानिया जी, एक मिनट पठानिया जी, ऑल्सो दे आर सेइंग सरकार में तो सबसे पहले मेरठ साहब ने मिलिट्री ने हथियार डाले थे कि ऐसे ना हो इनका, क्योंकि ये दोनों किसान के ही बेटे हैं। जो किसान लड़ रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है, वो भी किसान की माँ का बेटा है, और जो हल चला रहा है वो भी किसान की माँ का बेटा है। कि ऐसा ना हो प्रशासन एक दिन हथियार डाल दे कि हम अपने किसान भाइयों पर आप आदेश करते रहो, हम गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है तुषार गुप्ता, ये हालत ना हो जाए किसी। ठीक है तुषार गुप्ता, I'll give you the last word. We have spoken about what the BJP is calling the Congress's hypocrisy. We've spoken about the democratic rights of farmers as well. And you know, Advocate Mahima Singh makes a point. These are citizens. If I'm a citizen of Delhi and you're a citizen of Delhi, Tushar, and Mr. Pathania is a citizen of Delhi, then farmers of this country are citizens of India, and Delhi is as much their capital as it is our capital. Why block them from coming in? आपने ब्लॉक नहीं किया होता तो शायद इतना तमाशा नहीं होता जो हो रहा है अभी शंभू बॉर्डर पे। 26 जनवरी 2021 को नहीं ब्लॉक किया था, लाल किले पे जाके तिरंगा उखाड़ दिया था, वो सही था। बिल्कुल सिटीजन्स है, हमारे सिटीजन्स है, हमारे किसान है, हमारे भाई हैं, पर कौन सा सिटीजन जाके लाल किले से तिरंगा उखाड़ फेंकता है? कौन उखाड़ फेंकता है? कौन से सिटीजन होते हैं? Again, I'm saying give them the MSP, give them the MSP What are you trying to tell me? They are citizens of this country. No, I'm just trying to say. I don't think it will do us any good to villainize these people. So Shreya, that because doesn't that give is them a exactly free what pass you're to trying to create do. Don't vandalism. villainize them, yaar. Shreya, but that doesn't give them a free pass to vandalism. If you let them walk into Delhi, No, maybe Shreya, there won't be Shreya, vandalism. you're giving them a free pass to vandalize flyovers. The police in Haryana is saying, okay, walk to the national capital. You have your customized tractors. The people are giving interviews like saying on camera कि अगर आपसे पंजाब नहीं संभलता हमें अलग पंजाब बनाने दीजिए। आप कह रहे हैं ये सिटीजन्स है। आप देखिए तो सही वो टीवी इंटरव्यूज में बोल क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं आपसे पंजाब नहीं संभलता हमें पाकिस्तान में मर्ज होने दीजिए। कल पिछली बार के आंदोलन में माननीय राजनाथ जी जब गृह मंत्री थे उन्होंने भी बोला था मेरा देश का किसान अपनी जगह सही है, उसको पाकिस्तानी खालिस्तानी देशद्रोही नकली किसान उग्रवादी मत बोलो, ये माननीय राजनाथ जी ने कहा था पिछले आंदोलन में, और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था मैं देश के किसान से माफी मांगता हूं, हम समझा नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, और मेरा देश का किसान सही है, वो ना आतंकवादी है ना खालिस्तानी है ना आतंकवादी है, वो देश का अन्नदाता है। ये माननीय राजनाथ जी के भी शब्द थे पिछले आंदोलन में, और प्रधानमंत्री जी के भी शब्द थे। आप माननीय राजनाथ जी से भी ऊपर हो रहे हैं क्या? अरे फिर आप ही बोल लीजिए। Advocate Mahima Singh, I know you want to say something. 20 seconds. 20 seconds to Mahima and 20 seconds to Mr. Pathania. First to the Congress Party. Go ahead, Mahima. एक सवाल के साथ आपके शो पे अपनी बात खत्म करूंगी। संसद के अंदर अभी हाल ही में जो घुसपैठ हुआ था वो एक भाजपा के एमपी के पास पे हुआ था। ये सवाल अपने आप से पूछ लें, आज इस देश के अंदर नफरत की राजनीति और घुसपैठ को कौन बढ़ावा दे रहा है और असल में लोगों के हक की बात कौन उठा रहा है? लद्दाख, बिहार, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, एमपी सबको बराबर याद रखें। मिस्टर पठानिया, 20 seconds. यस श्रेया, मेरा एक बड़ा विनम्र निवेदन आपसे मास्टर जी, जहां हर एक नागरिक को उसके एक मौलिक अधिकार और अधिकार है, वहां उसके कुछ दायित्व भी हैं। दिस इज नॉट एट ऑल एन अनफेटर्ड राइट, एन एब्सोल्यूट राइट, इवन राइट टू प्रोटेस्ट, टू गो ऑन स्ट्राइक, इट हैज रिपीटेडली बीन called down upon by the Honorable Supreme Court and the various judicial legislations on the part. My very respectful submission, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में शांति के साथ बैठ के आप बात करें। सरकार बात करने को तैयार है, आपकी हर एक मांग को बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ आप में से जो लोग हैं, some people जी, हम आपकी राजगद्दी नहीं मांग रहे, देश की सत्ता नहीं मांग रहे, हमारी बहुत छोटी मांग है। एक तो मोदी जी की सिफारिश है कि MSP गारंटी कानून और C2+50, ये तो 2011 में मोदी जी ने कहा था, किसान आयोग का गठन, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और आवारा पशुओं के लिए का गठन, छोटी मांग है। किसी की राजगद्दी तो मांग नहीं रहे, तो फिर आपको अगले चुनाव में सत्ता दे देंगे। ठीक है।
Okay, Mr. Patania Master and Master Shivraj Singh. 1 minute, Tushar. Okay, हो गया. Tushar, I didn't let you complete your thought. You've heard everyone. You wanted to say something. I'll give you the last word on the show. All I'm saying is give them the MSP they deserve. They deserve it. They're hard workers. They're laborious people. Give them the MSP they deserve. Implement the Swaminathan Commission formula by all means. But then you also have to factor in the kind of cost the government also bears for the welfare of the farmers. It can't be a one-way traffic. It can't be that the government always does everything for the farmers or the citizens as taxpayers do everything for the farmers. If there is an expenditure on fertilizer, on seeds, on water, on electricity, on any other kind, then the state governments and the center have a right to factor in that when it comes to the MSP. Agar sarpi they deserve, there's no doubt about it. But then the costs need to be realistic, that's all. Okay, so it can't be my way or the highway. Tomorrow, once again, the government is going to be meeting with farmer leaders. Can the deadlock be broken, as it were? It's looking tough because the farmers have dug in their heels. They're saying nothing less than an MSP law will do. The government says we simply cannot afford it. So let's see how talks go tomorrow. Advocate Mahima Singh, we'll talk more again tomorrow. Thank you very much. Time over. Tushar Gupta, thank you very much. Singh Saab, up studio, thank you very much. And Mr. Patania, always good to have you on the show. I'm slipping into a quick break. There's some more news on the other side. Do stay with us.